Hello. Rudraksh, am I audible? Yes, Mahek, you are audible and you may start. Okay. Hello, everyone. Good evening. I hope you all are doing well. Let's make this Saturday evening productive and enjoyable as we dive into learning some exciting new skills. I am Mahek Sharma, the lead of Google Developer Group's on campus CL Bajaj, and I warmly welcome all of you to today's session that is Zero to Full Stack AI Application. So, if you have any questions, feel free to type them in the chat section or raise your hand. Also, at the end, we have an assignment section for you. If you complete it and provide proof and provide your answers in the chat section, you will receive a certificate for that. Now, without further delay, let's get started. Harshita, over to you, Harshita. Good evening, everyone. Welcome to the Web Development Workshop, which is a full stack AI application. My name is Harshita Dubey, and I'm thrilled to welcome you all to this amazing workshop. Today, we'll learn how to create a web development project that combines backend, frontend, and AI powered features. By the end, you will have built something you can proudly showcase in your portfolio. Let's dive in. So, talking about the workshop takeaways, in this workshop, you will achieve four key outcomes. First, you will understand the core technologies behind web development. Second, you will gain hands on experience by building a full stack project. Third, you will learn how to deploy it live for others to see. And finally, you will walk away with a professional grade project that demonstrate your skills. Excited? Let's get started. Here are the plan for today's workshop. We'll start with an introduction to essential tools and concepts in web development. Then we'll move into the backend development, including API design and database setup, followed by front-end development, where we will create and integrate user interfaces. Finally, we'll combine everything into a fully functional project, walking through each step together. It's going to be a comprehensive session, so stay with me. Now, let's talk about the introduction to web development. Let's start with the basic. So, what is web development? Simply put, it's the process of creating websites and web applications using technologies like HTML, CSS, and JavaScript. But why should you learn it? Well, web developers are high in demand, and these skills are the foundation for countless tech careers. Plus, it's a great way to bring your ideas to life, whether it's a personal blog, a portfolio site, or even the next big startup. The evolution of web technologies are web technologies have came a long way. Early website was static with basic HTML and no interactivity, just plain text and images. Then came CSS, which allowed designers to style and lay out websites. Next, JavaScript revolutionized the web by enabling interactivity like animations and dynamic content. Today, modern tools like React and Angular make it possible to build responsive, user friendly applications that work seamlessly across devices. It's an exciting time to be in web development. Talking about the old and modern practices in the front end development has seen significant improvements. In the past, websites were static and limited in design flexibility. Now, with tools like React and modern CSS techniques, we can create dynamic, responsive, and visually stunning websites. This means users get a better experience whether they are on a phone, tablet, or desktop. Talking about old and modern practices in the backend development has evolved too. Previously, it was tightly coupled with the front end and relied on heavyweight frameworks and hard coded logic. Today, we use lightweight frameworks like Node.js and API driven architectures like REST and GraphQL. This allows us to build scalable, maintainable, and more efficient applications. Now, let's talk about the project overview, which we are going to do in this workshop. Our featured project for this workshop is an AI driven application that converts handwritten math equations into digital form, solves them, and even graphs the result. It's built using React, TypeScript, and Express.js. The app includes handwriting recognition, graphical visualizations, and user centric design. This project is not only innovative but also highly practical for showcasing your skills in modern web development. The outcomes of this project are by the end of this workshop, you will have mastered key technologies like React, TypeScript, and Express.js. You will also learn to build an intuitive user interface, integrated advanced APIs, and create graphical features to visualize data.
Most importantly, you will have complete application to demonstrate your expertise and creativity. That's the overview of what we'll cover today. I encourage you to ask questions anytime during the session. This is your chance to learn and grow. Let's get hands on and start building something amazing. Over to you, Rachit. Rachit, you are not audible. Rachit, try changing the audio. Hello. It's good now. Okay. So let's see what we'll build this evening. We'll build something like this, sort of a blackboard where we can draw mathematical expressions basically and calculate their results, something like 2 plus 2, and then we'll calculate by this button through an AI, and we can reset our screen by using this button. We can increase the size of our pen or decrease it when we like it. So we are going to build this app this evening. So how we're going to build it? The tech stack is React. We're going to build it using React, using White, the JavaScript build tool. You can check out this documentation if you want to know more about it. Let's jump to the code. Yeah, so this is our front end directory, which contains all the front end code in here. And in this directory, the source directory is the main one, which contains our components and stuff. All basically the functionalities are in here. And in basically the app.tsx file, tsx because we are using TypeScript. Let's just go through the code once. So in this particular file, we have some imports: create browser router, router provider from React Router DOM, auth provider, login form. All these code, we'll see how they will come in handy. So there is an array, paths array. When you see the root directory, oh sorry, the root route is being protected. Why? Because it only can be visible through authenticated users. If you're authenticated, then you can visit this route. And we have two more routes: slash login slash sign up route. An element is present over here as well. Then we are creating an instance using browser router, and we pass the paths, all three paths through it. Now let's look at the return section. Return section has been encapsulated in auth provider for authentication of users, and maintain provider is basically a UI component library. Basically, for UI button text, we have used maintain, and browser router is passed through router so that users can navigate between different routes. So let's just move to slash sign up route now. Okay, so this is sign up component over here. This also has a bunch of imports. We have imported use effect, use state from React, use auth for authentication, use navigate to navigate between different routes, and these are all UI component functionalities from maintain. Axios, which is a HTTP library to request uh, our APIs for the stuff we need. Backend URL, the backend API that we have built. So let's just go through this sign up form. Okay, so these are a bunch of state variables: name, email, password, errors. These are all empty right now.
Use navigate will be used to navigate between different routes. Now let's just look up the sign up function. It is an async function that uh, it needs three parameters: email, password, and name, and all three are strictly typed using string because it's TypeScript. So we await because async is used. Axios is used, which is the HTTP library, to cause a post request to our backend URL slash user slash sign up. And email, password, name of the user has been passed. And if we catch an error, there will be an error sign up failed. Now this handle submit function is important because this gets triggered when the user clicks on submit button on the sign up page. It is an async function as well. React event handler has been passed down here. Error has been set to null. Let's just try await because it's an async function as well. Now here is what the sign up function gets triggered. Means email, password, and name got passed through here to the sign up function. And when the sign up is successful, we'll alert the user using sign up successful, and user can go through the to the root, canvas basically, where he can draw. If we catch an error, sign up failed, please try again. Use effect and user. When the user will change, then this use effect will occur, and this will navigate the user to the canvas. Let's just go to basic React return. What the return is over here. It is not very important as such in the functionality. Let's just see there are three text fields: name, email, and password, and a sign up button. This sign up button, when the user press, this function gets triggered, handle submit function. And if the user already has an account, he will click on the login button. That will redirect the user to the login route. Let's go to the login route, which is pretty much the same. This is the login component. It also has a bunch of imports, basically all the same imports, but you can see cookies over here as well, which will be used for authentication. So login form, a bunch of state variables, pretty much the same. Navigate function as well to navigate between different routes. Const login, asynchronous function as well, email and password. So we don't need the name right now because the user already has an account. So const rest, so we are awaiting a response. Axios.post backend URL slash user slash login, and we pass the email and password. Set user name rest.data.name. So response will be of objects. So data.name, data.email, data.id. Now this is important over here. Cookies.set token rest.data.token. Now at the login time, the backend will create a JavaScript web token, and it will set that into cookies for authentication. And if we try to do any such operation like through when we click on the calculate button in the main canvas, then the token will get passed also, because if the token is not present there, that means the user is not authenticated. This is important. Handle submit. Handle submit will get triggered when the user clicks on the submit button. Await login. Login function gets triggered over here, and that will navigate the user to the canvas. This is pretty much the same. In the return section as well, you have the text input, email, password, and title is login. And here is the login button. Even if you don't have an account, you can click on sign up, which will redirect you to the sign up page. So let's just move to the main canvas, which contains all the functionalities and stuff. So this is the main canvas, which have a bunch of imports as well. Color swatch and group from Mantine code, which will be used for UI functionalities. We have created a functionality for buttons in this folder as well, components UI button. These are the hooks of React. Useref is going to be very important over here to get the access of XY points. Axios, which is a library, HTTP library for requests, making requests. Draggable, why? Because when we draw, we will have to drag our pointer. This is imported from React draggable library. And backend URL and swatches. So we have already discussed backend URL. Swatches is basically an array of colors over here. If you see, different colors where the user can pick from. So these are two interfaces which have structure expression, which is strictly typed to string, and answer is string. Interface response. So this is the response that we'll get back from the API call.
which will contain an expression, result, a sign, boolean. And if this boolean will be true, then only things will proceed further. So let's just discuss this function, which is the main function over here. Const canvas ref is equal to user ref HTML canvas element null. So this creates the canvas where we will draw. Canvas is basically the blackboard that you saw. These are state variables. Const is drawing, set is drawing, use state false. If the user is not drawing, it is set to false. Color, set color, it is set to white, but if the user changes the color, it will change respectively. Erase color, set reset, use state false. If the user clicks on reset, then the canvas will get, whatever you have drawn will get erased, as we saw. Dict of war, set dict of war. This will contain all the mathematical expressions that we have. Result, set results. Now this is important because this is strictly type to generated result. Now generated results, an interface that we created. That means when the result will be generated, it will contain an expression and an answer. So this is important. Const latex position. Now what is latex, set latex position? This is basically, this will you be helpful at the time of API call when we'll get the response. So how we'll display our result to, because when we draw something, we'll calculate the center of those coordinates and we'll display our results there. So it is by default set to these coordinates, but this will change. Const latex expression. So this contains all the latex expressions. Cookies.get token, because we had token that we have set up during the time of login. We get those tokens. Let's just discuss all the hooks that we have over here. Use effect, result, render latex.canvas. Now this use effect will get triggered when the result will change. Result will change only when we get the result, because it is nothing over here. This function will get triggered. This will contain result.expression, result.answer, which was in generated result, expression and answer. So let's just see this function, render latex.canvas. This is the function over here. It takes an expression, an answer, and const latex. What these expressions may feel a little difficult, but what does these expressions do basically? The things that we draw, it is not very accessible, sorry, understood by our computer, maybe in that way we can understand. So this latex basically converts so that our backend API can understand all these. Set latex expression, these three dots basically represent the separable operator in TypeScript. This means if there is an array, that array will get deleted. It will create a new array. Old elements will be present there, but this new element that we have created right now will also be present. So this will create, get the current reference of the canvas. If canvas is present, canvas.style.background, it will black the background. Get context 2D, why 2D? Because we draw in 2D, X and Y axes. ctx.clear React. Now why do we do that? We do this because when we have to display our result, it get displayed over the portion that we have drawn. So we need to clear that, because if we do not clear, it will get overwrite and it will not be visible very clearly. So that's the reason for this. So I'll just move to next, use effect. Yeah, use effect, if reset. If the user clicks reset, canvas will get reset. Set latex expression, because nothing is present, so it will be empty. Set result will be undefined because there is no result, because there is no mathematical expression on the canvas. Dict of war, nothing. Set reset will be false. Use effect. Now this use effect is important because this will get triggered only once, because when you see the dependency array and the thing is there. So this will get triggered only once. Let's just so this portion is canvas declaration. All the formation of the canvas is over here. Const canvas equals canvas ref dot current. It will get the current canvas. Get context of 2D because we draw in 2D. If ctx canvas.width is equal to window.inner width, this means it will take the entire width of our browser. Canvas.height, window.inner height minus canvas.offset top. It means it will leave some space for the parent element present over there. This means our cursor will be round, its width will be 3, and it will be black. ctx.fillWrap 00 canvas.width, canvas.height. This means that the black color will be from
0 0 coordinates to canvas dot width, canvas dot height coordinate. That means we'll cover the entire space. This particular section is for math.js execution. Math.js is basically a JavaScript library which is used to display mathematical mathematical expressions onto the screen, because we don't have keys for integrals or any more complex mathematical expressions. So this is for that. Yeah. So this use effect is over. This we have already discussed this render latex to canvas. Now this function reset canvas will get the current canvas, 2D context of that canvas, fill the color with black, and then we'll clear it. Now this function gets triggered when we start drawing. It takes React event handler, get the current reference of the canvas. If the canvas exists, we'll get the 2D context of it. ctx.begin path, because we have not drawn anything yet, we are just beginning to draw. Dot move to, it will get the current XY axis coordinates and set is drawing to true. Why? Because we have a state element, set is drawing, set is drawing, which was set to false, and now because we have started to draw, this will change to true. Now, const draw, again a React event handler, is drawing return. If it is false, then it will return nothing, because we are not drawing anything. Const canvas is equals to canvas rep.current, we'll get the current canvas, we'll get the 2D context of that canvas. Strokes style is equals to color, the color that we have selected. ctx.line to e.native event.offsetx, get the current coordinates xy axis. ctx.stroke will be responsible for the line formation, that line that is formed when we draw. Now this function is stop drawing. When we stop drawing, we set is drawing false, nothing very fancy in it. Run route, this is important because this will get triggered when the user creates the calculate button. When the user creates calculate button, it's an asynchronous function and it gets the current reference of our canvas. If canvas is present, which it will be present most probably, it will get a response, await, Axios, a post method to our backend URI. And what it will send, this is important because we are sending an image, canvas.toData URL image /png, because we'll convert that drawing to an image and we'll also send the mathematical expressions that are present. And this is for authentication because remember we generated a token back at the sign up thing. So this token will go in the header section. Const response is equals to await response.data, because response.data will be an array of objects. If data.assign is equal to true, now this will connect to the interface that we have generated. Okay, this was the response and now we are getting the response. Yeah, if data.assign is equal to true, then only we'll set this state variables. Again, the 3 dots means separable operator, which will contain dict of was, and also the expression and result that we have got, because data.assign is true anyways. Now this portion is for calculating a sort of a rectangle type of a thing. For example, if I draw something like this, and this portion will be converted to an image, for example. Okay. So we'll get the 2D context of the canvas. Now, this portion, minimum x will be canvas.width, minimum y will be canvas.height, max x will be 0, max y will be 0. Why? Because anything greater than 0 will be maximum for these people, max x and max y. Anything lower than canvas.width or canvas.height in this perspective will be lower for min x and min y. Why we are doing this? We are doing this to calculate the smallest image basically, so that we don't inculcate any other unrequired stuff. For this is a loop that will run through the pixels. Now pixels have 4 attributes and the last attribute is for transparency, and this I calculates that 4th attribute. And if you see in this if section,
image data I plus 3 is greater than 0, this is basically the fourth attribute that calculates transparency. And if this thing is greater than 0, it means the pixel has been overwritten by the user. So this means that particular pixel needs to be included in our image. So min x is math.min min x min x. If it is smaller, then x will go same way. Now we'll calculate center x, center y. Why? Because when we want to reflect our answer on the screen, we'll reflect it through the center of our image. This is why this thing has been done. Expression data.xpr, because the real value was xpr, data.result. And why there is a 1 second set timeout over here? This is because we want to have a gap of 1 second before displaying the result, either or it will look a little hashy. So yeah, this was the run route function. Let's go to the return thing. Okay. So in the return function, there is a reset button, and what happens on click? Set reset is equal to true. Remember that state variable that we had, it becomes true. This is what important over here. Set erase color becomes whatever color we have chosen, and the color of this button is black. Now this is important. Swatches.filter swatch is equals to, so this will run a loop basically. Color swatch, key swatch, color swatch. On click set color swatch. Set color swatch will basically set the color that we have chosen through. We have basically, you can add as many colors you like. RGB coding basically. You can add as many colors you like. Yeah. So this is about the color section. Eraser, on click set color, it will turn to black. Set erase color, background will turn to black, because when the eraser comes, as we have a black screen, when we erase, the background will turn to black. Run button, on click, run route gets triggered, as we saw over there. On mouse down, we'll start drawing. What does this mean? On mouse down, on mouse move. On mouse down means we have clicked our mouse basically. In layman terms, on mouse move means we are dragging. On mouse up or on mouse out means we have removed our finger from the mouse, in very layman terms. So yeah, so latex expression dot map latex comma index. Now this will have our expression, latex expression, and this will have our index. Index means all those accesses. Default position will be latex position, as it was mentioned in the state variable. Okay, set latex position x, data.x, data.y. This is the data that we'll get from the API. Yeah, that's it for the front-end portions. We'll can discuss all these config files, but this will require a lot of dependencies and stuff. So you can figure that out by seeing the import statements that we have bring over here. Color swatch, crop, all these things have been used for our basically making components and stuff. Yeah, this is front end portion, and once yeah, so this is our front end portion. This will create something like this. Now I would like to call Mayank to take over. Hello everyone, I am Mayank Gupta, and today I will be guiding you all for the backend development of this project. So let me share my screen. Okay. Now, before getting started to code, first let us learn some concepts. Firstly, Node.js. Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 engine that allows server-side एग्जीक्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड. मतलब ये एक हमें ना ऐसा रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे हम जो जावास्क्रिप्ट जो पहले ब्राउजर पे लिखी जाती थी उसको हम अपने सर्वर में रन कर सकते हैं. और एक्सप्रेस.js उस नोड.js रन टाइम के ऊपर बना एक फ्रेमवर्क है. ठीक है. और mongoose हमारा एक ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल है. बेसिकली वो हमारे डेटाबेस से के थ्रू मतलब कम्युनिकेशन को बहुत आसान बना देता है. नहीं तो हमें मतलब इसकी जो अगर हम MongoDB के उसमें जाते हैं कि कोर लाइब्रेरी में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. और जेसन वेब टोकन जो JWT बता रहे थे कि वो टोकन जनरेट होता है, ये टोकन जनरेट करने में मदद करता है जिससे हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं.
मिडलवेयर जावास्क्रिप्ट वो नोड.जेएस का एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसको हम मेन अपने एंड पॉइंट पे जाने से पहले उसके ऊपर हम कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये ना कुछ चेन टाइप होता है कि जैसे हमारा जैसे मेन रिक्वेस्ट ही हो गई, इसके मेन रिक्वेस्ट पे हमारे पास कोई आई हमारी रिक्वेस्ट, ठीक है, और ये हमारा एंड पॉइंट है। इससे पहले कि अगर ये हमारे एंड पॉइंट पे जाए, हम ये ना इसे चेन बना सकते हैं कि पहले इस मिडलवेयर पे जाएगा, फिर यहाँ से कुछ होगा, इधर जाएगा, फिर जाके हमारे मेन पे जाएगा। और ये जो जितने भी मिडलवेयर्स हैं इनमें हम अपने उस रिक्वेस्ट बॉडी पे म्यूटेशन भी कर सकते हैं और कुछ डेटा फैचिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और यहीं से हम रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं कि भाई ये चेक, जैसे अगर मान लो ये हमारा ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर है, तो हम यहाँ से ना बोल सकते हैं कि आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो तो आप आगे नहीं जा सकते, यहीं से हम अपना रिस्पॉन्स भेज देंगे, ठीक है। तो हमारे प्रोजेक्ट से जाने से पहले मैं आपको थोड़े बहुत ये कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो एक नई फाइल बनाते हैं, ठीक है। अब इधर ना मैं एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा, अब इसे ना नोड.जेएस की मदद से इस जावास्क्रिप्ट के कोड को हम अपने टर्मिनल में रन कर पाएंगे। नहीं तो हमें चाहिए होता ब्राउजर, लेकिन अब यहाँ देखना, देखा, ये हो सकता है। और अब हम आते हैं कि हम अपना एक npm क्या होता है। npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। अब ये जो नोड पैकेज मैनेजर होता है ना, हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लाइब्रेरीज पैकेज होते हैं जो हम नोड.जेएस के थ्रू अपने वेब एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए हम npm का करते हैं। तो अभी एक जल्दी से एक्सप्रेस.जेएस का ऐप प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए कमांड होती है npm init। ये हमारा एक नोड.जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। एक मिनट, ठीक है। तो अभी यहाँ देखना, ये फाइल बनी पैकेज.जेसन। अब ये जो पैकेज.जेसन फाइल होती है, इसमें हमारे नोड.जेएस अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोजेक्ट, वो कौन सा पैकेज यूज कर रहा है, कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहा है, वो सब, ठीक है। अब जल्दी से एक एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, फिर उसका एक ऐप बना के सर्वर क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। बेसिकली हमें ना फिर वो एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। ये जो फंक्शन हमने एक्सप्रेस फंक्शन बनाया, ये हमें एक ऐप रिटर्न करता है जिसके ऊपर हम अपना सर्वर रन करा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू रन दिस सर्वर ऑन 8000 पोर्ट, एंड after this server gets started I want to execute some code, right? So let's say I want to execute this code, server running fine on 8000. So and now if I write node index.js, server running fine on 8000. So this indicates that our server is running fine. Now let's quickly create our first API endpoint. So for example app.get select. Now here I will pass the URL where I will be mapping that API endpoints. For example hello, and here I will pass a callback function which will accept 3 parameter request, response and next. I will say rest.send hello from GDG. Now if we go to browser and check that API endpoint, we will see that our API endpoint is working fine. So here I will say localhost 8000 slash it's there's some issue, let me check this first. या हमने अपना वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करा था, रीस्टार्ट वो करना होता है। तो देखो हेलो फ्रॉम जीडीजी। अब ये शायद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं और वहां पे फिर मैं आपको बताऊंगा आगे काम कैसे हो रहा है, ठीक है।
So this is our entry point where our request first will come in this index.js file. Here we are creating that express app and starting our server, right? So first of all, when our server is created, when our app is created, we are saying this app will use calls. Calls basically allows request to come from different server or different machine other than our server where backend is hosted, right? So and then we are calling connect to database. अब ये जो फंक्शन है ना, ये हमारे डेटाबेस से कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश करता है, ठीक है? तो ये हमारी डेटाबेस की यूआरएल हो गई। आपको दिखाता हूँ ये कुछ किस तरीके से दिखती है। ये इस टाइप से हमारे डेटाबेस की यूआरएल होता है, वो दिखता है, ठीक है? और इधर हमने अपना mongoose लाइब्रेरी का यूज करा है ताकि हम कनेक्ट कर सके हमारे डेटाबेस से, और डेटाबेस का कनेक्शन होते ही हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि कनेक्शन टू डेटाबेस सक्सेसफुल, राइट? अब इधर आए हम, फिर हमने बोला कि भाई इस मिडलवेयर का यूज करो। मैंने आपको शायद मिडलवेयर नहीं बताया, मिडलवेयर हाँ बताया, वो ये जो express.json फाइल होती है, express.json होता है, ये एक मिडलवेयर होता है जो हमारे इनकमिंग रिक्वेस्ट में जो बॉडी होती है उसको पार्स करने में मदद करता है जेसन फॉर्म में, ताकि हम उसे यूज कर सके। और इधर हम अपने राउट्स डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा इस स्ट्रिंग को मैच करने वाला जो भी पैटर्न होगा वो इस राउटर को यूज करेगा, और जो इस राउटर को यूज करेंगे इधर हम अपने एंड पॉइंट्स बताते हैं कि भाई ये साइन अप का, ये लॉगिन का है, और ये हमारी मी का है, ये अपडेट का, ठीक है? इधर हम पोस्ट, गेट और पुट डिफरेंट टाइप के मेथड रिटर्न कर सकते हैं। अगर इस एंड पॉइंट पे पोस्ट के अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आती है कि गेट रिक्वेस्ट आती है तो वो मना कर देगा, ये कोई है ही नहीं, ठीक है? इस टाइप से होता है। अब इधर आते हैं हम अपने मॉडल्स में। अभी जो mongoose होता है, इफ mongoose want to store a data object in the MongoDB, then we have to define a schema, and this schema contains the structure of how our data will look. These are the bare minimum conditions which our data have to fulfill, right? And then we are creating this model or schema using this mongoose.model, and we are exporting this, and this mongoose.model get used in our controller or function where we are writing the function or writing the logic which will be executed, ठीक है? Now let's in sign up function, what we are accepting, we are accepting name, email, password in the request.body, right? And now we have to check if the user exists or not. अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? यूजर जो ये जो मॉडल है इसका एक्सेस, इसके थ्रू एक्सेस करेंगे हम फाइंड वन फंक्शन को, और फाइंड करेंगे कि ऐसी कोई ईमेल के साथ कोई यूजर है हमारे डेटाबेस में। अगर डेटाबेस में यूजर होगा तो हम बोल देंगे भाई यूजर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप नहीं आ सकते। नहीं तो हम उसका जो पासवर्ड है उसे हैश करेंगे बिक्रिप्ट लाइब्रेरी के थ्रू, और उसे हैश करके हम अपना एक नया यूजर क्रिएट करके उसे हम रिस्पॉन्स में भेज देंगे, ठीक है? सिमिलरली लॉगिन होगा, और सिमिलरली ये गेट मी वाला होगा कि यहाँ से हम डिटेल्स ले सकते हैं यूजर की, और इधर होगा अपडेट यूजर। तो इधर यूजर अपडेट करने के लिए ऑथेंटिकेटेड हो, ये दोनों राउट्स है ना ऑथेंटिकेटेड है, जो कि आपको यहाँ दिखेगा। देखो इधर देखना, ये गेट मी ऑथेंटिकेट टोकन। अब ये क्या करता है फंक्शन, ये हमारा मिडलवेयर है जो कि चेक करेगा कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसके हेडर में हम अपने फ्रंट एंड से क्या करेंगे ना कि एक टोकन भेजेंगे, वो टोकन चेक करेगा कि भाई ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। देखो यहाँ पे हम टोकन डिकोड कर रहे हैं, और अगर है तो ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर देगा। अब ये नेक्स्ट फंक्शन बताता है कि आगे जाओ, मतलब रिक्वेस्ट को आगे बढ़ा दो, अगर नहीं है तो हम यहीं से रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, ठीक है? अब ये हमारा कैलकुलेट फंक्शन है कि जो हमारा मेन जो इमेज आती है ना उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, उससे हम रिस्पॉन्स कैसे लाते हैं। तो सिंपल देख, हमने एक कि उसके पास जैसे प्रीवियस एक्सप्रेशन हो सकती है। मैं आपको प्रोजेक्ट का एक बार आर्किटेक्चर बता देता हूँ कैसे काम कर रहा है। देखो ये फ्रंट एंड है हमारा, इसने रिक्वेस्ट भेजी, अगर जो भी लॉगिन और साइन अप की रिक्वेस्ट होगी वो तो डायरेक्ट जा सकती है भाई। अगर कोई यूजर ऑथेंटिकेटेड है नहीं तो वो पहले ऑथेंटिकेट करेगा, अगर उसमें भी हम बोलेंगे लॉगिन पहले से होना चाहिए तो फिर बात क्या हुई, ठीक है? और यहाँ से ये जो हमारा कैलकुलेशन करता है कि जो हमारी एआई के पास रिक्वेस्ट जाती है कि ये इमेज को डिटेक्ट करो, उसमें हमने लगा रखा अपना मिडलवेयर। अब जैसे रिक्वेस्ट इस पे जाएगी वो पहले यहाँ से जाएगा, और ये इसने फिल्टर आउट करा, फिर वो हमारे इस फंक्शन के पास जाएगा, और वो फंक्शन जेमिनाई की एपीआई को
हिट करेगा कि भाई इसको हम इसका रिस्पॉन्स दो, और यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम इधर आएगा, इधर हम उस पर कुछ फंक्शंस, उस पर हम कुछ कोड एग्जीक्यूट करेंगे और उसे हम वापस भेजेंगे। ठीक है, अब मैं इसे दिखाता हूँ आपको। ये हमारा कैलकुलेट फंक्शन है, इसमें हमने क्या करा, प्रीवियस एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस कुछ हो सकता है, मतलब कि रिजल्ट है हमारा कि जैसे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारी जो प्रीवियस एक्सप्रेशन होगी ना वो इधर आ सकती है। इधर हमने एक क्लास बनाई है जिसके थ्रू हम अपना वो मॉडल को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इधर हमने बोल दिया गूगल जनरेटिव एआई मॉडल है। ये मॉडल दिखाता हूँ आपको, ये हमारी जेमिनाई जो हमें एपीआई प्रोवाइड करती है, और उसके थ्रू हम उसके मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे ये दिख रहा होगा गूगल जनरेटिव एआई, ये एक पैकेज है जो सॉफ्ट एसडीके प्रोवाइड कर रही है उस मॉडल को एक्सेस करने के लिए। इधर हमें उसकी एपीआई की देनी होती है, और ये जेन एआई डॉट गेट जनरेटिव मॉडल, और इधर हम अपना मॉडल स्पेसिफाई कर देते हैं, और यहाँ से प्रॉम्प्ट डाला और इस फंक्शन को यूज करके हमें वो रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, और इधर भी हम वही कर रहे हैं, देखो आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा प्रॉम्प्ट है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है इतना बड़ा उस फंक्शन के एग्जीक्यूट करने के लिए, और इधर जो ये वेरिएबल डेटा दिख रहा है आपको, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाइड डिक्ट ऑफ वार्स, ये वो है। ठीक है, और ये हमारा मेन फंक्शन है जो कि इधर ये इस पार्ट में हम उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जेमिनाई को, और इधर देखना आपको इनलाइन डेटा, मतलब ये ऑब्जेक्ट उसका वो होता है फॉर्मेट किधर भेजना है, इधर हमारा इमेज जा रही है। ठीक है, और यहाँ से हमारा वो रिस्पॉन्स जा रहा है, और ये रिस्पॉन्स जब हम वापस भेजते हैं अपने, इधर देखो यहाँ पे इधर स्टेटस डॉट जेसन, और यहाँ से हम अपना रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, और ये रिस्पॉन्स हमारे उधर आ जाता है, फ्रंट एंड पे दिख जाता है। अब मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। क्योंकि हमारा ऑलरेडी सर्वर रनिंग है इस पोर्ट पे, तो वो नहीं चलेगा, हमें पहले सर्वर को बंद करना होगा इधर, और अब शायद चल जाएगा। हमारा सर्वर रन कर रहा है, और यहाँ से हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने फ्रंट एंड पे जाएंगे, और इधर ये हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, अब हमें इधर लॉगिन करना होगा, तो मैंने एक ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, मतलब अकाउंट बना रखा है, मैं उसी के थ्रू लॉगिन करूँ। हाँ, ये हमारा क्योंकि पासवर्ड हमने गलत डाला है, तो उसने बोल दिया कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड डालेंगे, और ये देखो वो खुल चुका है। ठीक है, अब इधर हम ड्राइंग करते हैं जो भी है। अच्छा हाँ, अगर क्योंकि एक बार हमने ऑथेंटिकेट कर लिया है, तो अगर रिफ्रेश करेंगे ना, हमें दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ऑलरेडी डायरेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब जैसे मैं 4+4 क्लिक करता हूँ, और मैं इस पर रन पे करता हूँ। हाँ, थोड़ा वेट करना होगा। देखो ये आ गया ना, ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया, और ऐसे ही हम इसे पहले रिसेट करा, हम कुछ भी फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ 4 × 5, थोड़ा वेट लगेगा, टाइम लगेगा, और उसका रिस्पॉन्स आ चुका है। ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स सा करते हैं कुछ, कि हमने पहले डिक्लेयर कर दिया x = 4 + 5। ठीक है, तो ये देखना आप,
ये x इक्वल टू 9 हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि हमारा ये कांस्टेंट, मतलब हमने x की वैल्यू बता रखी है, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू x प्लस 50, तो देखना ये। अच्छा, आपको लग रहा हो कि x ये तो इमेज में जा रहा है, ये इमेज का पार्ट है ही नहीं, ये ना इमेज का पार्ट ही नहीं। अगर मैं जैसे अगर इसको इधर भी रख दूंगा ना, तो भी ये कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस 50 59, तो यही सब चीज है। अब हम जाते हैं इसके डिप्लॉयमेंट पे। डिप्लॉयमेंट के लिए बैकएंड के लिए हम यूज कर रहे हैं रेंडर, और फ्रंट एंड के लिए वर्सेल। तो रेंडर पे बैकएंड डिप्लॉय करने के लिए पहले तो आप इसकी गिटहब रेपो बना लेना, और उस गिटहब रेपो से रेंडर पे लॉगिन कर लेना। रेंडर पे लॉगिन के बाद हम जब डैशबोर्ड पे आएंगे, हमें कुछ इस तरीके का यूआई दिख रहा होगा। अब इधर हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, सिंपल प्रोजेक्ट, राइट। तो नहीं, ऐड न्यू वेब सर्विस, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारी जितनी भी गिटहब की रेपोजिटरी आ रही होंगे ना, वो दिख जाएंगी। जैसे हमारा ये है बैकएंड वाला, हमने इसे क्लिक करा, इसे कनेक्ट करा, और इधर हम इसकी जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो लिखते हैं। तो हमारा नाम हमने, ठीक है, हमने ये रखा है नाम, कोई दिक्कत नहीं है। रन टाइम हमारा नोड.जेएस रहना चाहिए। ब्रांच कौन सी है जिससे हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगा, वो मेन है। रीजन इसे हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फ्री अकाउंट है, लेकिन अगर आपके पास पेड अकाउंट होगा तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। रूट डायरेक्टरी अभी हम कुछ नहीं रखेंगे, बेसिकली ये बताता है कि आप कोड किस डायरेक्टरी में, ठीक है। और बिल्ड कमांड हम npm इंस्टॉल रखते हैं, और ये जो हमारी स्टार्ट कमांड होगी वो ये होगी, ठीक है। और अगर हम इधर करते हैं फ्री पे क्लिक करा, इधर हमें अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स देने होंगे। जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स होंगे ना, वो इस फाइल में होंगे हमारी, और इधर हमने कॉपी करा, और इधर हमने एनवायरमेंट वेरिएबल्स पेस्ट करके डाल दी। इधर हमारी जेमिनी की एपीआई की है, डेटाबेस का यूआरआई है, और जेडब्ल्यूटी हमारा टोकन है, ठीक है। जेडब्ल्यूटी का सीक्रेट है। और अगर इसमें एरर आता है तो उसे हम यही सॉल्व करेंगे, वैसे एरर नहीं आना चाहिए। डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं कुछ क्या आता है। ओके, हमारे सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है, और अब इसे डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से ना सारे लॉग पढ़ सकते हो वैसे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ और वो डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद हमें इसकी ये मिल चुका है, ठीक है। ये इसका यूआरएल होगा सर्वर का। और अब इस सर्वर के यूआरएल को हम क्या करेंगे ना, इधर बैकएंड यूआरएल पे पेस्ट करेंगे। इधर मतलब हमारा अब बैकएंड का यूआरएल ये है। इधर हमने बोला एपीआई, क्योंकि एपीआई एंड पॉइंट भी लगाना होगा ना, ये तो हमारा डोमेन है, और ये कंप्लीट यूआरएल है। अब हमने इसे सेव करा, और गिटहब पे इसे मैं पहले पुश कर देता हूँ। आप इसकी जब गिटहब रेपो बनाओगे ना, तो आप पूरा कोड एक साथ जाएगा। मैंने कोड पहले से रखा है, मैंने इसे सिर्फ अपडेट करा, ठीक है। और मैं इसे करता हूँ कि यूआरएल चेंज, ठीक है। अब हम आते अपने वर्सल पे। वर्सल पे इधर आपको लॉगिन, वही गिटहब से लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा यूआई दिखेगा। इधर ऐड न्यू पे जाना, प्रोजेक्ट। इधर आप कोई टेम्पलेट मत चूज करना अभी फिलहाल। यहाँ पे आपको वही गिटहब रेपोजिटरीज दिख रही होंगी, इस पे इंपोर्ट पे क्लिक करना। ये ऑटोमेटिकली फ्रेमवर्क ये सब डिटेक्ट कर लेगा कि सोर्स डायरेक्टरी क्या होगी। और अगर कोई एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं तो हम सिमिलरली इसी ऑर्डर उसी तरीके से इधर भी पेस्ट करते, तो सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। अभी फ्रंट एंड में हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा, तो हम नहीं जाएंगे, और सिंपल क्लिक करेंगे डिप्लॉय पर। और यहाँ पे भी हम लॉग्स चेक कर सकते हैं कि कुछ दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है। होपफुली नहीं आए।
हमारा बिल्ड सक्सेसफुल अभी बिल्ड करने के लिए चालू करा क्योंकि पैकेज सारे हो चुके हैं और ये अपने वीट का बिल्ड कमांड एग्जीक्यूट कर दिए और ये हमारा बिल्ड कर देगा और हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। अभी देखना इधर इधर लॉग इन करके देखते हैं। मैंने एक चीज बताना भूल गया क्योंकि हम रेंडर के फ्री उस पर हैं तो ये क्या करता है ना, अगर हमारा सर्वर अभी इनएक्टिव है मतलब उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो उसे डाउन कर देता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा इसे रीस्टार्ट वगैरह करना पड़ सकता है। नेटवर्क टैब और इधर पता चल जाएगा कि हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट किधर जा रही है और ये देखो लॉग इन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ तो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो चुका है क्योंकि हमारा लॉगिन ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, और मैं इधर वही अपना कमांड कैलकुलेशन करने के लिए कुछ ड्राइंग बनाते हैं इधर, मतलब एक्सप्रेशन लिखते हैं 4+4 राइट, रन करते हैं इसे। देखो आ गया 4+4 8। ठीक है, और यहाँ पे देखना ये हमारा लोकल नहीं है, ये हमारी यूआरएल ही है, तो सारी चीज अब लाइव है। आप इस यूआरएल पे जाके भी चेक कर सकते हो। वैसे 5x प्लस y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 20। देखो ये आ गया ना y इज इक्वल टू 20। तो इसी तरीके से मतलब एक मिनट, या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कुछ दिक्कत हो गई थी, मैं अभी आ गया। तो आपने देखा हमारा बैकएंड वगैरह सब होस्ट डिप्लॉय हो चुका है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं और बाकी बाद में आप चाहे तो मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं और या फिर ग्रुप पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेरे आपको सारे सोशल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे पूछ लेना। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड पेइंग योर टाइम। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। थैंक यू। हेलो। Yes, sir, you are audible. Okay. Alright, so I hope you guys can see my screen now. I'll tell you guys what you have to do for your assignments. All of those who are left. Okay, so first off, पहले तो हम लोग रिपोजिटरी शेयर कर देंगे, उसमें readme.md में मतलब सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है। ज़्यादा टास्क नहीं है, फ्रंट एंड के 2 टास्क हैं और बैक एंड के 2 टास्क हैं। पहले देखते हैं कि फ्रंट एंड में क्या क्या करना है आपको। द फर्स्ट फ्रंट एंड टास्क इज डूइंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर द लॉगिन एंड पॉइंट। हर एक टास्क में लिखा भी हुआ है कि किस फाइल में आपको ये टास्क करना है, so you won't get lost in the project. So let's go there. The first front-end task in the login.tsx file. Here we have calc front-end main, then src, and then screens, wait, components, and then login.tsx. Like right here, you have to do your task. You have to make a post request on this backend URL. You have to store that content of the post request into a res variable. It's actually just one line of code. It's not much, so don't worry about that. And after that, all of these red lint validations will be gone. So ऐसा मत समझिए कि अभी कोड ही खराब है. It's all because I have removed that one line. Once you do that line, it'll be all good. The next front-end task. Front-end task 2, make a post request on the calculation endpoint. For this, you have to go to src screens index.tsx and right here line 147. Right here you have to perform and you have to use Axios, just like Rajat told you what Axios is. You have to use it to perform a post request on this URL right here, backend URL AI calculate. You have to get the response in a variable named response, and the rest of the code will start working. That's it for the front end part. Now let's move on to the backend tasks.
The first task, implement authentication token middleware. This one's also quite easy right here in the router and then use router.js. Here you have to import the authentication token from middleware. ये आपको मयंक ने बताया होगा middleware क्या था और authentication token कैसे मिल रहा है. So this authentication token right here, you have to import it in this file and then use it. Here, here, and here. Mayank has told you all these. Then after that, the last backend task, and consider it as the final boss task because it is quite lengthy. You have to implement the login functionality, like the entire code for it. And that one is right. I think it's right here. User control JS. Yes. Login function. You have to write the login function. Once again, it's quite similar to the sign up function right here. The steps to make it are all described. Like if you follow them, you won't be facing any issues. Like if you missed any point that I mentioned, then do not worry. It's all given in much more detail right here in the documentation itself. After that, like once you have done all the changes, how you have to submit? First off, you have to fork the repository. After that, do all the tasks as they have been mentioned. After that, you can create, and there's this file named name.md. Open that file. And here, you have to give your name. Like after completing on the task, just give your name and the certificate will be generated on that name. Let's go back. That's it, fork the repository and include your name in that name.md file and then create a new branch with your name. And that's it, you're done. We'll be happy to generate your certificate. That's it, guys. That's how you have to do. Like if you want another small hint, then all of these things that I have told you, like all these tasks, they were described in detail in the entire session. So that's a hint for you. Like if you really want the code, then it's right there. That's it. You have to put a little effort. That's all. Thank you. And अगर आपको GitHub की कमांड्स में कुछ दिक्कत हो तो हम आपको एक चीट शीट भी शेयर करेंगे. उसका मैं कुछ दिखा देता हूँ GitHub की चीट शीट. Yep. So let me show you that cheat sheet. So ये कुछ दिख रही है आपको इधर ना सारी कमांड वो क्या करती है कैसे लिखने होते हैं वो सब आपको डिटेल्स में मिलेगी. हम आपको ये शेयर कर देंगे. तो हम आपको आज हाईली एनकरेज करते हैं कि आप प्लीज इस असाइनमेंट को कंप्लीट करें. आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा. और कुछ भी डाउट हो आप तो यू आर फ्री टू आस्क. Anyone has any doubt? Yeah, the GitHub repo link will be shared in our community with some changes also. So the GitHub repo will be shared there. Any other? Good evening. I'm Piyush. Yeah. I said how to submit the code and where to submit the code. Okay. So आपको ना पहले वो रेपो जब क्लोन करोगे तो आपके पास लोकल में वो सेटअप हो जाएगा प्रोजेक्ट. लोकल सेटअप पे जब प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए उसके बाद असाइनमेंट टास्क जो भी पूरे करना. फिर उसका क्या करना आप जैसे मैं आपको गिटहब पे दिखाता हूँ. Okay. और क्या ये जो सर्टिफिकेट रहेगा वो जीडीजी की तरफ से ही रहेगा क्या? हाँ वो जीडीजी की तरफ से रहेगा. और इसकी जो असाइनमेंट कंप्लीट करने की डेडलाइन है वो मंडे तक है. तो जैसे ही हमारी इवेंट असाइनमेंट वाली रेपोजिटरी जिसकी आपको लिंक मिलेगी इधर आपने कुछ भी क्रिएट करा इधर ना इधर से ब्रांच पे आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. ओ हाँ मैं शेयर कर देता हूँ भूल गया. ठीक है दिख रही है. हेलो. हाँ दिख रही है. हाँ तो इधर ना ब्रांच क्रिएट करना. तो न्यू ब्रांच इधर ब्रांच नेम क्रिएट करने के बाद ब्रांच क्रिएट हो जाएगी. जैसे आपका नाम पीयूष है तो पीयूष ब्रांच क्रिएट हुई.
और अब इधर हम पुल रिक्वेस्ट पे जाएंगे। तो पहले आप ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी ब्रांच पे करना। ठीक है, अब जो आपने रेपोजिटरी फोक करी होगी, फिर आप यहाँ से उस पे जो भी चेंजेस होंगे, आप जब गिटहब पे पुश करोगे ना, तो या तो आप यहाँ से न्यू पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर वो ऑटोमेटिक दिखाएगा कि सम चेंजेस आर देयर, क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। तो इस जो कंपेयर मेन वाली होगी, इधर तो डालना पीयूष, ठीक है, आपकी जो भी ब्रांच होगी, और यहाँ पे वो मेन ही रहने देना। अब इधर क्या करेगा ना कि जो भी आपके चेंज होंगे वो आप पुल रिक्वेस्ट जब क्रिएट करोगे वो हमें दिख जाएंगे, हम उसको उसके हिसाब से सारी आपकी डिटेल्स सब लिख लेंगे। और हाँ, वह एक और चीज, जो भी आप कोड डाल रहे हो, मतलब जो भी आप रेपोजिटरी में चेंजेस कर रहे हो ना, उसमें एक रीडमी फाइल और ऐड कर देना जिसमें आपका नाम और डिटेल्स होगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो आप डिस्कशन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर? Mayank, share the repo link in the chat as well. I have shared the repository link. Any other doubts? Any doubt related to the code or backend? Shivam, the deadline is till Monday. You can submit anytime till the Monday. Thanks, Ansh. So should we end the session then? फॉर बैकएंड स्टार्टिंग, वी एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, आपको इस डिस्कशन के बाद कुछ बैकएंड स्टार्टिंग के लिए चैनल्स हो गया और कहाँ से आप सीख सकते हो वो सब भी शेयर कर देंगे। ठीक है, वैसे लेकिन बैकएंड स्टार्ट करने के लिए आप पहले जावास्क्रिप्ट चूज करना। जावास्क्रिप्ट लर्न करने के बाद आप जब जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे, फिर आप नोड.जेएस सीख सकते हो। नोड.जेएस आप सीखोगे, आप नोड.जेएस आप जैसे हितेश चौधरी का चैनल है, वहां से सीख सकते हो, या फिर पीयूष गर्ग है, वहां से सीख सकते हो। और फिर उसके बाद आप जब फ्रंट एंड सीख लोगे थोड़ा सा, तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाना आप सीख जाओगे। कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। We can do one more thing as well. I want all the development team members to share their socials in the chat. So if anyone have any kind of issues, they can reach you out. All the development team members. After that, we will end the session. So this is my link tree. Here my all socials are listed. If anybody want to contact me, can contact me there. Any more doubts? Yep, so we may end the session now. Thank you all for joining the session. Hope you all liked it, and we would love to have your feedback as you will get a mail for it. Thank you, everyone.